अस्सलाम वालेकुम तुम खैर मकदम बे अकिस लाइव ब्रॉडकास्टस मज वनकस लाइव करान रतिमपुरा गामस मज आदिल सोब वनकस रतिमपुरा गामस मज ये इस्तकबाल प्यारान तो दियो नजर फिलहाल था आदिल सोब नमाज पढ़ने नमाज पढ़ कर तकरीर अमिस क्या वन So I had to pitch something here only. Just a minute period. तो पे क्या है मतलब वनकस बे तम पॉलिटिशियन रिपीट ऑफेंडर्स बेम एक्यूज इर्द गिर्द कर बिकॉज बहुत ये दिस स्पीच आई जस्ट वांट इन रतनपुरा। अस्सलामुअलैकुम। शाहिद सोब सोन लाइव पे निशानी करी शेयर ब्रोट कुन वात रतिमपुर गाँव पलट कर सर 5,000 वोट 5,500 पन्नस गामस ये ोर बीजेपी बीजेपी शहर सारे खुद करियो लाइव पकन ब्रोट कुन यह करियो शेयर ज्यादा तो ज्यादा करियो लाइव सोन शेयर बे करियो पेज फॉलो सारे ताम वात आदिल सोबन मुहिम हमजा दीजिए एजाज माइक नेमिस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खास करके खुदाम के अपील के इम्तिहान हाजिर 5 के तकरीर कर रतिमपुर कन लुकन खतर बाशूर लुकन इन गुजारिश करना हम चौकस मज जनाब मोहतरम के मिनट 5 जहान आदि सबक अमिस पैगाम वतन रतिमपुर कन लुकन नश वाक़ई वस्सलाम। गाड़ियां ने तो लाइव ही चला माइक देस करियो तो स्टार्ट ईमेल पाने जीचा इंज पे देखे आई थी पाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रतनपुर आमुत डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मज एजुकेशनल हब
वो पकड़ो दहाव जो यन पे कंपेनिंग लग स्टार्ट करें रतनपुर में मेंशन कोर्मुत इन एवरी स्पीच रीजन अकुई सानिस डिस्ट्रिक्टस मज रतनपुर बे खिव हिस्टोरिकली द मोस्ट एजुकेटेड रतनपुर एकेडमिक्स मज टीचिंग पे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ताम डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स तमें मूजूब बह यसान यह स्पीच ये दिन सो दैट यथ एरियास मज यस एजुकेशनल ब्रिलियंस ज्यादा तम समझन स्पीच दिन बह पत मे नाव आदिल भट्ट अस निशान विंडो सह करो डिस्कस पत सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जस मेन कैंडिडेचर ऑफर गो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वनकस सानि रेस मज पोलिटिकल पार्टीज बे लकट पोलिटिकल पार्टीज वार बोझो जो पोलिटिकल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस बे PDP बाबोर कॉन्स्टिट्यूंसी मज बे पोलिटिकल पार्टी तथ अपनी पार्टी मगर अपनी पार्टी यथ एरियास मज किसी पहचान अच्छा अंग्रेज पे वन ब्लिंकेडनेस गो तमिक वजूदी कह मगर वनकस जो पोलिटिकल पार्टीज बहुत सारी लोग बोजन जान सान नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP कैंडिडेट कैंडिडेट जोहर मीर 3 टाइम कैंडिडेट रोजमुत यह 2002 मज सेकंड फेज मज पोस्ट 90 पोलिटिकल प्रोसेस गई स्टार्ट 2 वोट आय तमिस मगर इन स्पाइट ऑफ 2 वोट सो रतनपुर तो MLA तम पे 2002 पे 2008 एंड 2008 पे 2014 3 लटो सो MLA मे बासान इट इज नॉट ओनली रतनपुरा पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी मज शर्म हज कत 2019 पे गई पोलिटिकल प्रोसेस दम लट स्टार्ट सो 2024 मज 2024 मज पोलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट एंड अगर रतनपुर अवाम यह मैसेज कर पुश ओवर तुम कर डिसाइड तुम कुछ राइट कैंडिडेट यह प्रोफेसर एकेडमिशियन डॉक्टर रिसर्च साइंटिस्ट तुम अगर यह डिसाइड कर तुम हेकन पगह ब्लेम कर यह नसा सोन कैंडिडेट बहुत तमाम लुकन वन ध्यान सान बोझो तुम 2014 मज बनो PDP BJP अलायंस यम पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुन जाए वथान तुम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह पुश ओवर यह लॉन्च कोर्मुत कि अमिस कैंडिडेट्स क्या बैकग्राउंड यम पोलिटिकल पार्टी लेबल करान यम हसा लॉन्च करना गो कर बह इंट्रोडक्शन 2014 में जब PDP और BJP का अलायंस हुआ उस अलायंस में BJP ने एक पॉइंट मैन राम माधव को कश्मीर में भेजा। कश्मीर में एक राम माधव इंट्रोड्यूस हुआ एज ए BJP जनरल सेक्रेटरी, तो उसमें वो अलायंस जो है उसी ने फॉर्म किया। उस टाइम 2014 में BJP PDP कंबाइन में हुकूमत बनी और हुकूमत एप्लीकेशन से पहले खत्म हो गई। 2024 में इलेक्टोरल प्रोसेस अब फिर स्टार्ट हुआ और राम माधव कश्मीर वापस आया है। राम माधव कश्मीर वापस आया है और राम माधव 2014 के बाद 2019 तक BJP में गुमनाम था।
2014 से 2019 तक वो गुमनाम था कि वो आज सेकंड एक्शन था. Why are you eating? How can I? You should. When I'm saying something, you should kill about Rama. 2014 से 2019 तक राम माधव गायब था. अगर तू रात वुचो रात और राम माधव के कशीर बीजेपी की 50 सीट बनाने खतर अकि साइड नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्यूज करान PDPS दपान कि यह आव PDP स्ट्रेंथन करने वापस. महबूबा मुफ्ती वनान ना इसके साथ हमारा कोई रास्ता नहीं है. मुझे जान सामने सामान मतलब महबूबा मुफ्ती वनान कि असली इंस्टीट्यूशन कोर वास्तव मगर यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस अख पॉलिटिशियन उमर अब्दुल पॉइंट मैन तम नाव देवेंद्र राणा वन 2014 मज अलायंस खतर तैयार बे उमर अब्दुल्ला जम्मू चीफ मिनिस्टर रटने खतर तैयार. यम दोन पोलिटिकल पार्टीजन हंद हेड जस्टिस मसूदी ब्या जहूर मीर यम एक्यूज करान बाकियन तुम BJP से गो कर बह इंट्रोड्यूस जस्टिस मसूदी ए रिटायर्ड जज. फारूक उमरान तो उमर उमरान हो आज रिटायर्ड जज ओन तम थकन खतर पे तम थकन खतर कि मज गन हुडविंग तम गन हुडविंग कि अग जज हसा सत जज या ब्यूरोक्रेट आज 6 वन से नौकरी कर्म जज बहान with due respect to all the judges and Justice Masoodi was little bit higher judge. He was not a session judge, he was not a munsif, he was a justice. Even if पूरी जिंदगी में आसान होल गमस बोलने से तो पता justice deliver करना. We should now मगर उतान पेशर पर काट I will take a liberty and a chance and I feel Ratnipura is a place where almost 100% population is educated. There is a huge line between education and literacy, but this is an education town. They have to remember one thing. There are two political candidates. One is Justice Masoodi and another is Zuhur Mir. I think it should be below dignity, with due respect, if an illiterate man who is a repeat offender, he has been 3 times MLA, if he has been sent to parliament, if you see recent videos where he says that as Gam can wana yitken, Tishar can wana yitken. Ak candidate gets in that areas with also populous, yemis rural, semi-rural, urban, semi-urban, pure thoda pahadi touch us and who has complete understanding of the entire demography of the area. He should have understanding of the things which are zamini level shasan, which are micro level things. And I want to raise the bar in this town, and I want to discuss 2 candidates, Justice Masoodi and Zuhur Mir. Justice Masoodi, आप सब लोगों ने देखा कश्मीर में when he was in parliament. In English, there is a saying, he was not stammering, he was stuttering. Stammering to stuttering go, he had nothing to say. If you remember, I think everybody should remember in Kashmir, everybody should remember in particular Kashmir and in our constituency when the people of Kashmir, particularly South Kashmiris, were waiting with the bated breath. A representative of this constituency had to say something about the Article 370 and 35A, which was abrogated in the middle of night when Kashmir opened its eyes in the morning. They saw
the voices, the Home Minister of the country that time says that this article is abrogated. And who were the people who were defending that? That was Justice Masoodi. And everybody from this podium, the whole Kashmir, because we are fighting elections without any finances, we are fighting elections on people's mandate, we are fighting elections with a home-grown, people's-driven campaign. It is a shame if the educated youth of the whole constituency will not concentrate, will not be a part, will not play a role of thinking and going into the details of every candidate. We have got two candidates. I repeat and reiterate. We have got two candidates. One is Justice Masoodi, a person who just was stuttering and stammering in Parliament. And the background of that gentleman is he has been a judge. Up to 62, 63 years, he has been a judge. Farooq Abdullah and Umar Abdullah, they wanted to hoodwink Kashmiris, give an impression that in my team of politics, we have a retired judge. Nowhere in the history of Indian democratic process you must have ever seen judge being a part of politics. Sometimes they nominate Rajya Sabha members. And it is every educated youth of the constituency of Pampur should think not once, think twice, thrice and 10 times. That is the person, namely Zohur Mir, who is a default politician. First time he won when there was complete boycott in the whole constituency and he won 400 and 500 votes जो उसके मोहल्ले वालों ने डाले. Then he lost his father. Due to that, he won another election. This is the time the window of hope has come to every constituent of district, this Pampur constituency. Because our जो हमारा निशान है, that's a window. Basically ये निशान कैसे आता है? ये निशान 400 सिंबल्स इलेक्शन कमीशन के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं. उनमें से कैंडिडेट को 3 सिंबल सिलेक्ट करने होते हैं. उन 3 में से हमें विंडो मिला. So I took this opportunity and I prayed and मैंने नमाज शुक्राना पढ़ा because I believe the pitch of my campaign is window. विंडो से रोशनी आती है 2019 और 2024 तक. I repeat, ध्यान से सुनो, ये सिंबल हमें वहां से ही मिला है. 2019 से 2024 तक जो कश्मीर में एक light, the light had been faded, but we are here when we believe we can fight 370 and 340, but not symbolically. These two political parties are slugfesting in the name of electoral politics, but they are the ones, primarily National Conference and secondary Mufti Muhammad Saeed's party, which is PDP. The same people who were behind this formation of PDP has come to Kashmir. बीजेपी में तो कश्मीर में कुछ है ही नहीं. बीजेपी के कैंडिडेट सिंबॉलिकली 2-3 गाड़ियों में निकलते हैं. They don't have a goal to meet anybody. आप मुझे बताओ, डिस्ट्रिक्ट पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट आपके सामने आता है? Does he take question and answers? Does he meet people? Does he meet people? He doesn't meet anybody. But ये मैं इलाका के लोगों को बोलना चाहता हूं कि they have to play a part. अगर आप लोगों ने फिर इन्हीं लोगों को चांस दिया तो we cannot blame ourselves. हमारा निशान है विंडो. That's not important. Important is मेरा नाम है आदिल भट्ट. अगर मैं इतनी पूरा आया हूं, मेरी सर्विसेज टू द सोसाइटी 10 साल क्या है? For that I request, this time request as a politician, कि आप हर एक हमारे फेसबुक और हमारी कैंपेन जो 10 साल में हमने एज अ सोशल एक्टिविस्ट सक्सेस ली है, where I have to fight the same people, same politicians
जिनके पीछे क्रोनिक कैपिटलिस्ट छुपते हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पर दूसरी जगह में थोड़ा मतलब आई डोंट थिंक आई हैव टू टीच क्रोनिक कैपिटलिज्म टू पीपल ऑफ रतनीपुरा। रतनीपुरा के लोग दे आर इन यूएस, मैं खुद भी रहा हूँ, आई हैव स्टेड इन यूरोप। रतनीपुरा के लोग आई हैव सीन इन मिडिल ईस्ट, यूरोप, बट आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट एंड आई डोंट थिंक I have given them open challenge, even Justice Masoodi, who belongs to my hometown. And in my hometown, as a parliament member, he cannot come in front of the people. The population of my hometown is 25,000. He selectively comes to some home in the middle of night and vanishes in the morning with a thin air. And another one is repeat candidate 3 times, and this is the time रतनीपुरा एरिया के लोगों को मैं आज वोट नहीं मांगूंगा। They have to join and see this gentleman has a potential to represent Pampur constituency where Ratnipura is the most literate and educated township. मैं again repeat करना चाहता हूँ, from this 2 political candidates, National Conference and PDP और एनसी पिछले 24 घंटे से आपस में मतलब दे आर स्लग फेस्टिंग। दे आर एक्यूजिंग वन मैन whose name is Ram Madhav, who was General Secretary of BJP. He has come here when BJP has no presence in Kashmir, not with a single electoral. So who is he meeting? Is he meeting Mahbooba Mufti, or he is just safeguarding National Conference? I want to make every Kashmiri remember when 2019 में आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, उसके एक दिन पहले who was on TV, there was a televised address where you could see Farooq Abdullah, Justice Masoodi sitting with the Prime Minister of India. I repeat, they were sitting with the Prime Minister of India. What were they doing? Riches. Angri's Bergo, what were they doing? Were they playing marbles? They must have boughten gindan. Same cheese. Yachi tim apus banan. Tim cha tama asna saas ko pai. Agar na tim pai tim cha, do you think tim agar represent them question at a higher level or constituency must have tim lakshi level must represent them? What I want to repeat, Timman use nafar agis malas jod chu asan. तब मालस मज हेके सुबह बनित ए मिशन पाई अगर तो हमारी मिशन पाई सुशम ना केबल अगर तमिस फिक्र तोर तचुमटर so the chief patron of National Conference is hoodwinking the whole Kashmiri sentiment by saying that I don't know, but televised address one day before when whole Kashmiri saw Justice Masoodi sitting next to Farooq Abdullah having a meeting with Prime Minister of India that time, who is the Prime Minister of India now, and next morning Kashmir was robbed of its dignity. So after 6 years, when we are going to electoral polls again, where after 6 years the people of Kashmir want to join the electoral process, where they will field their own candidate to the assembly. Again, these same 2 people in our constituency at a higher pitch, same Umar Abdullah, same Farooq Abdullah. I will not go there, but I'm just reminding people, they should remember when Justice Masoodi was talking in Parliament, do you think any Kashmiri will believe that he must have been a judge earlier? He was stammering, he was stuttering. That means he is not only incompetent and inefficient, he cannot lead the pack. But the shameful thing for me, but not for the electorate, is Zohar Mir. Zohar Mir is creating a binary between urban and rural. He thinks urban people have never accepted him because he is not good enough to represent a mohalla. He is the most lucky man, a default politician who got benefits because for 15 years this constituency was 90% people were boycotting. But I think this is the time. Yet alakas mangasam sari uch kulavan.
they should open their eyes. First, I will not ask today that they should vote for me. They should join the campaign. मैंने आज economics की बात ही नहीं की. There are a lot of people who are calling me. जो मेरा economical package का idea है for pitching as the saffron destination और BNQ की जो arc है जो limestone deposit से बनी है और क्यू में हमने जो industrial success we have got where we regulated the cement industry and ended up getting a CSR which is a model CSR, that is every home is getting allowance, residential home, 1600 families are getting benefited. Before people really pushed me and drove me, convinced me that I should join a political fray, the reason behind was that I had something to offer. Otherwise, I would have never joined a political process. I want to repeat and say some last things. Politics is a French word and a Greek word. It is politic and politics. So it has nothing to do with the representation of a candidate who wants to do something for the people. The idea of politics is higher. You do politics between opposing parties in assembly. मगर एक इलाके में, एक एरिया में, एक इलाके में माइक्रो लेवल में जो हर इलाके की प्रॉब्लम है वो समझना जरूरी है. मसूद इज इनविजिबल, ही इज एन ओल्ड मैन, old, and another one is Zohar Mir. Zohar Mir cannot read and write. Zohar Mir has still not understanding how to get a system in play because वो अभी भी ट्रांसफार्मर्स बोलता है मैंने दिए जो PDD देता है, अभी भी बोलता है मैंने वाटर कनेक्शन दिया जो PHE देता है. The shameful and the most disgusting, I beg your pardon if I use little but high-handed words, but this is the time. If people of my constituency are in slumber, if they will be sleeping, then they are not to be blamed. We are fighting an election on people's resources. The vehicles are people's. So why I was not a known figure in Rajnipura or elsewhere, the reason is very simple. If I would have joined a political party 5 years before, people I would have come to know because you will see a lot of reels popping up. But I kept my success within the area because I wanted to achieve it. Due to that reason, I was not available on any social media site. بہٕ چھُس وَنان کہِ بہٕ اوسُس نہٕ کُنہِ سوشل میڈیا سایٹہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ موٗجوٗب بہٕ اوسُس نہٕ پبلسٹی یژھان کَرٕنۍ کینٛہہ اَسہِ میلہِ تَتہِ کامیٲبی تہٕ اس کے بعد we decided, I was convinced by people that why did I choose Ratnipura? Because Ratnipura is an educational hub. यहाँ individual success लोगों की बहुत ज़्यादा है, but collective success में I don't think इस area next to इस पोहू वहाँ इतनी success है. ये success transfer करने के लिए there has to be somebody, a robust representative जिसको ये आइडिया हो कि रत्नपुरा की एजुकेशनल कामयाबी कैसे फैलेगी पहले अपने जोन में कागपुर तक, पहू तक, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, पिंगलेना, आगे पुलवामा. So individually if you think this is the place where you have got academicians, you have got scientists and doctors and teachers and professionals scattered all over in different parts of the world and in university. And I want to thank the people here just listening to me, but I want them to open their eyes. My symbol is window. Nishan Dur now Adil Bhat. I want him Yetas Nuksha, Timnun exchange number. At least they will have an idea. If there are any third person who can replace them. I don't find Justice Masoodi and Zohar Mir as competitors because they joined politics. I have been with people. I have a success behind me. I am joining representation, not politics. Thank you very much. Assalamu alaikum.